5 साल काम किया है, तो वहाँ के प्रोफेसर से मेरी बात होती है, तो वहाँ के प्रोफेसर्स को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सिलेबस में डालने के लिए बोला है कि पहली क्लास से आयुर्वेदा एक असेंशियल सब्जेक्ट बन जाए, तो उसका सिलेबस की भी तैयारियां हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहली क्लास से बच्चा जब आयुर्वेद सीखेगा तो डेफिनेटली वो, उसको मुझे लगता नहीं है कि जीवन में कभी एलोपैथिक की शरण में जाना पड़ेगा। तो सिलेबस में भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आयुर्वेदा अपना जो है आयुष अपना अपनी छाप छोड़ रहा है, और सभी लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं एक्टिव होके, जितने भी आयुष की संस्थान है वो भी अभी पूरी तरीके से एक्टिव है। तो ये मैंने जो है स्कोप के बारे में बताया है कि आयुर्वेदा का और आयुष का स्कोप प्रेजेंट सिनेरियो में और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा है। और एक और नई बात मैं बताता हूँ, कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हैं आयुर्वेदा के, जो पंचकर्म है, चाहे क्षार सूत्र है, या कुछ हाइजीन से रिलेटेड ट्रेनिंग है, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इन सब को भी, ये ट्रेनिंग्स पूरे विश्व भर में चलती हैं, लेकिन कहीं पे ये मसाज के नाम से चलती हैं, कहीं पे ये स्पा के नाम से चलती हैं, कहीं पे ये पंचकर्म के नाम से चलती हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज में ये सब ट्रेनिंग्स होती हैं, ये सब प्रैक्टिसेस होती हैं। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो RAB है आपका, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, दिल्ली में है, उसको एक्रीडेशन बोर्ड बनाया है, और जितनी भी ट्रेनिंग विश्व में चल रही हैं उनको एक्रीडेशन करेगा इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और RAB उनका एक्रीडेशन करेगा, और सारी ट्रेनिंग पूरे विश्व भर की आयुर्वेद और आयुष के नाम से ही रिकॉग्नाइज की जाएगी, और इंडिया ही उनको एक्रीडिटेड करेगा। और इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है आपके कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, या सर्टिफिकेशन बॉडीज हो सकती हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बॉडीज हो सकती है जो जिनको एक्रीडिटेड करेगा RAB, और पूरे विश्व भर में इस तरह की ट्रेनिंग्स को यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, आयुर्वेदा को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और एक यूनिफॉर्म पैटर्न और यूनिफॉर्म एब्रीविएशन लाने के लिए जो है पूरे विश्व भर में ये सब प्रसारित होगी। तो ये मैंने जो है कुछ रिसेंट अपडेट्स आयुष के बारे में आपको बताए हैं, जो अभी करंटली जिन पे वर्क चल रहा है गवर्नमेंट लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ये स्कोप के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया है। अभी मैं जो है कुछ चैलेंजेस हैं, रेगुलेटरी के चैलेंजेस, क्योंकि मैंने हर एक स्टेट की फार्मेसी को टच किया है, हर एक स्टेट की इंडस्ट्री को टच किया है, और जो कुछ चैलेंजेस रेगुलेटरी साइड से, स्टेटरी और रेगुलेटरी बॉडी जो आपकी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसकी तरफ से जो चैलेंजेस हैं, मैन्युफैक्चरर्स उन चैलेंजेस को कैसे फेस कर रहा है, और हम उन प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि पहले आप स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाइए, प्रोडक्ट अप्रूवल को करेक्ट कराइए, लेवल को करेक्ट कीजिए, उसके बाद ही हम आपके प्रोडक्ट को सर्टिफाई करेंगे। तो ये सब जो चल रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी कहीं पे भी नहीं है अभी, शायद मुझे लगता है कि रेस्पेक्टेड कटोच सर भी शायद जुड़ गए होंगे या जुड़ जाएंगे, तो वो उनको भी अवगत होगी कि हर एक स्टेट की क्या क्या पीड़ा है, क्या क्या परेशानी है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ। तो जो है एक अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो जो कुछ कॉमन पॉइंट्स जो मैंने देखे हैं हर एक स्टेट में रिलेटेड टू द रेगुलेशंस और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले लेबलिंग कंटेंट्स, जो लेबलिंग लेबल्स हैं प्रोडक्ट के, वो हर एक स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहे हैं, और लेबलिंग कंप्लायंस है वो एज पर शेड्यूल टी और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किसी भी स्टेट में नहीं है। ये सबसे कॉमन पॉइंट है। लेबलिंग कंटेंट ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन, स्पेशली प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स के लिए जो लेबलिंग कंटेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। जब प्लांट का जो नेम है वो बाइनोमियल सिस्टम से होना चाहिए, उसका यूजफुल पार्ट, रेफरेंस, फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ये सब मेंशन होना चाहिए लेबल पे। उसका इंडिकेशन क्या है, उसकी डोज क्या है, उसका टाइप क्या है, वो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी है कि आयुर्वेदिक क्लासिकल है, कि वो यूनानी प्रोप्राइटरी है कि यूनानी क्लासिकल है, वो भी क्लियरली मेंशन नहीं है।
यहाँ तक कि प्रोडक्ट अप्रूवल में कुछ और है। प्रोडक्ट अप्रूवल में जो डोज और डायरेक्शन दिया हुआ है कि 4 to 5 ग्राम ट्वाइस इन ए डे, ये अप्रूवल में है, जबकि लेबल पे लिख रहे हैं 4 to 5 ग्राम थ्राइस इन ए डे। तो अप्रूवल कुछ अलग है और लेवल पे कुछ अलग है। उसकी मॉनिटरिंग ना तो गवर्नमेंट कर रही है और ना ही मैन्युफैक्चर उस पर फोकस कर रहा है, और इस तरह की चीजें मेरे को अक्सर हर एक मैन्युफैक्चर के पास मिलती है। तो लेबलिंग कंटेंट्स में गैप जो है एक मेजर कंसर्न है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कुछ जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, उनकी अवेयरनेस भी मैन्युफैक्चरर्स को नहीं है। यहाँ तक कि सरकार जो है एसोसिएशंस के पास हर एक नोटिफिकेशन भेजती है, हर एक अमेंडमेंट भेजती है, क्योंकि कुछ एसोसिएशन के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो उनके प्रोस्पेक्टिव से ये पॉइंट है कि एक मैन्युफैक्चर को जो गवर्नमेंट में अपडेट्स हो रहे हैं, जो नोटिफिकेशंस अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, वो वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं। जैसे एक 2014 में एक नोटिफिकेशन आया था कि जो रसौषधि हैं जिनमें हैवी मेटल को एज ए यूजफुल इंग्रेडिएंट यूज किया जा रहा है, जैसे नाग भस्म है या रस माणिक्य है, ये सब जो यूज किए जा रहे हैं, उनके लिए हैवी मेटल टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। ये 2014 में नोटिफिकेशन आया है। और आज की स्थिति में ये है कि मैन्युफैक्चरर को भी ये मालूम नहीं है कि ये नोटिफिकेशन आया है और ये क्यों नहीं जरूरी है, और साथ के साथ जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं उनको भी मालूम नहीं है। तो जो नोटिफिकेशन है अमेंडमेंट्स की, अवेयरनेस मैन्युफैक्चर तक नहीं है, ये बिल्कुल ट्रुथ है। थर्ड पॉइंट इज जीएमपी कंप्लायंस। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उसकी कंप्लायंस भी पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से लोग उसका अर्थ निकालते हैं और अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से वो उसका कंप्लायंस करते हैं। तो काफी गैप्स नजर आता है उनके डॉक्यूमेंटेशन में, उनके रिकॉर्ड में, उनके सिस्टम में, इंप्लीमेंटेड सिस्टम में, कि जीएमपी कंप्लायंस 100% फुलफिल होनी चाहिए फॉर द कंप्लायंस ऑफ स्टेटरी एंड रेगुलेटरी गाइडलाइन। वो पूरी तरीके से 100% कंप्लायंस किसी भी स्टेट की फार्मेसी में हमें नहीं दिखी है। जो जिस तरीके क्लॉजेस लिखे हुए हैं, जिस तरीके से शेड्यूल टी कहता है, कहीं न कहीं उनका गैप जो है इंप्लीमेंटेशन में नजर आता है। क्योंकि जो हमारी ऑडिट होती है, हमारी ऑडिट जो है एक जीएमपी यूनिट में 3 से 4 या 5 दिन की ऑडिट होती है, और ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ आधा या 1 घंटे में विजिट करके चले जाते हैं। उनका इंस्पेक्शन है, हमारी ऑडिट है। तो हम क्या ट्रेस करते हैं कि कहीं पे भी उन्होंने कुछ मेंशन कर दिया है, उसको 10 जगह चेक करेंगे। यहाँ तक कि कहीं से टेस्ट रिपोर्ट भी लेके दिखाइए, उस टेस्ट रिपोर्ट जिसने टेस्ट किया उससे भी हम वेरीफाई करेंगे। तो हमारा क्रॉस चेक करना एक प्राइमरी पर्पस होता है कि जो वो हमें दिखा रहा है या जो बोल रहा है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। उसके लिए हम जो है पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी ट्रेसेबिलिटी करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है माल प्रैक्टिसेस करते हैं, उसको जो ऑडिट के दौरान जो है वो चीजें नजर आती हैं। तो जीएमपी कंप्लायंस यूनिफॉर्म नहीं है, कुल मिला के ये बात है। दूसरा एक और पॉइंट है इम्पोर्टेंट कि आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एज ए टेक्निकल पर्सन होना चाहिए। वैद्य जो टेक्निकल पर्सन है, हकीम या वैद्य होना चाहिए, 1 या 2 होने चाहिए। तो स्थिति यह है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो आयुर्वेदा फिजिशियन है उसका रोल जो है बहुत कम है। यहाँ तक कि महीने में 1-2 दिन आते हैं या फिर वो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। और कुछ एक अच्छी फार्मेसीज हैं वहाँ डेली जो है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट रहता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर रहता है, वो ऑर्गेनोलेप्टिक फीचर्स, रॉ मेटेरियल का आइडेंटिफिकेशन पूरा देखता है। लेकिन मैक्सिमम 60 to 70% इंडस्ट्रीज में आयुर्वेदा डॉक्टर्स और आयुर्वेदा एक्सपर्ट जो है फुल टाइम रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, और इसका जो है गवर्नमेंट की साइड से भी अनदेखी की जा रही है, और मैन्युफैक्चर भी इसका को भी अवेयर नहीं है कि वैद्य की क्या वैल्यू है और वैद्य का क्या रोल है ड्रग आइडेंटिफिकेशन में। जो भी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल ही फिनिश प्रोडक्ट की जान है। रॉ मटेरियल यदि आपका अच्छी क्वालिटी का आएगा तो फिनिश प्रोडक्ट के भी 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फिनिश प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलने के लिए रॉ मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, और रॉ मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आयुर्वेदा एक्सपर्ट का होना चाहिए। और इस रोल से जो है ना तो आयुर्वेदा डॉक्टर इसके लिए कॉन्शियस है, डिवोटेड है, ना ही मैन्युफैक्चर उसको इंसिस्ट करता है। तो ये भी एक यूनिफॉर्म गैप जो है पूरे देश भर में मिला है। तो आयुर्वेदा एक्सपर्ट की जो कमी है
दूसरा जो अभी मुझे लगता है कि जो CDCSO है, जो COPP देता है WHO GMP के बेसिस पे, CDCSO देता है COPP, और QCI से जो आयुष मार्क सर्टिफिकेशन है उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। ना तो डॉक्टर्स को अवेयरनेस है, ना मैन्युफैक्चरर्स को इतना अवेयरनेस है, और गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम को होते हुए इसको प्रमोट नहीं कर रही है। ये भी या तो स्कीम नहीं चलानी है तो बंद कर दो, और चलानी है तो उसको पूरी एनर्जी के साथ चलाना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, चाहे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे NABCB हो, क्योंकि एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर को ये बहुत बड़ी विडंबना या कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि डिप्लोमेटिक मिनिस्ट्री को नहीं होना चाहिए। और इसकी अवेयरनेस जो है आयुर्वेदा डॉक्टर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को होना चाहिए, ये भी एक गैप है। तो ये कुछ गैप्स जो है मैंने आइडेंटिफाइड किए हैं पूरे देश भर में, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। दूसरा एक और गैप है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स आयुर्वेदा के होते हैं, जो सैंपलिंग करते हैं मार्केट से, तो कहीं कहीं तो अच्छा सैंपलिंग होता है, कहीं कहीं एज पर रूल्स रेगुलेशन ड्रग इंस्पेक्टर सैंपलिंग करते हैं। कुछ स्टेट्स में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा सैंपलिंग करते हैं, मतलब हर एक प्रोडक्ट को मार्केट से सैंपलिंग करते हैं, और कई कई स्टेट्स में सैंपलिंग होता ही नहीं है। तो समझ में नहीं आता है कि सैंपलिंग का एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया क्या है गवर्नमेंट साइड से, तो और ये यूनिफॉर्मली पूरे देश भर में क्यों नहीं फॉलोड हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गवर्नमेंट सैंपल्स, जो गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स जैसे एलोपैथिक के इंस्पेक्टर सैंपल उठाते हैं, ऐसे आयुर्वेदा के भी इंस्पेक्टर्स को सैंपल मार्केट से उठाने की परमिशन है, और वो पूरे देश भर में यूनिफॉर्मली ये नहीं फॉलो हो रहा है। तो ये भी एक गैप जो है आइडेंटिफाइड हुआ है। तो ये मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको डिटेल में बताए, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं स्टेट वाइज, वो भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि स्टेट वाइज क्या क्या जो है पॉइंट्स हैं, और उनके प्रोडक्ट मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, वो भी मैं जो है उस स्टेट का नाम लूंगा। और डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को उसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, और फीडबैक लेना चाहिए कि और ट्रेस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो पूरा देश भर के लिए एक ही है, और शेड्यूल टी भी एक ही है, लेकिन उस शेड्यूल टी का वायलेशन हो रहा है या अलग अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये जो है ये बात जो है कहीं पचती नहीं है। तो जो वायलेशन हो रहा है DNC एक्ट का, जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र में एक नागपुर रीजन है, नागपुर एक रीजन है महाराष्ट्र में, जहां पे बिना GMP सर्टिफिकेट के मार्केट में प्रोडक्ट धड़ल्ले से जा रहे हैं। GMP सर्टिफिकेट ही नहीं है मैन्युफैक्चर के, जो कि एसेंशियल है। फॉर्म 26E1 पे GMP सर्टिफिकेट मिलता है, और बिना GMP सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट मार्केट में खूब बिक रहे हैं। और पता नहीं स्टेट का गड़बड़ी है कि सेंट्रल का गड़बड़ी है, आई डोंट नो, बट ऐसा हो रहा है। और मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको विद प्रूफ, विद एविडेंस आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई भी बात अपनी मन से या अपनी हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं है, जो है वो प्रैक्टिकल है। तो नागपुर महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है। दूसरा हिमाचल प्रदेश में कुछ एक्सीपिएंट्स हैं। हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में एक्सीपिएंट की लिस्ट दी हुई है कि परमिटेड एक्सीपिएंट की ये यूज होने चाहिए, परमिटेड एक्सीपिएंट। और परमिटेड एक्सीपिएंट के नाम पे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एक्सीपिएंट ऐसे हैं जो उस लिस्ट में नहीं है। उन एक्सीपिएंट को भी प्रोडक्ट अप्रूवल में शामिल किया है और उनको अप्रूव किया है। जैसे कि डाइमेथिकोन एक एलोपैथिक साल्ट है, उसको भी जो है एक्सीपिएंट में यूज कर रहे हैं आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स, और मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है। कैस्टर ऑयल वो भी यूज कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि यदि हम एलोपैथिक साल्ट भी हम डाल के आयुर्वेदिक मेडिसिन में बेच सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमें अप्रूव करके देता है, ऐसा उनका कहना भी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश। दूसरा तमिलनाडु में रजत भस्म लिक्विड और स्वर्ण भस्म लिक्विड। अब भस्म को लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एक तो ये टेक्नोलॉजी है, मतलब उनके प्रोडक्ट जो भस्म के प्रोडक्ट हैं वो लिक्विड फॉर्म में मार्केट में जा रहे हैं, सिरप फॉर्म में जा रहे हैं भस्म के प्रोडक्ट। और उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है रजत भस्म लिक्विड, स्वर्ण भस्म लिक्विड, ये लेबल पे लिखा हुआ है, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, और उसका कोई ऐसा रिसर्च एविडेंस भी नहीं है, और उस पर अप्रूवल मिला हुआ है, और लोग जो है मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में है। दिल्ली के अंदर प्रोडक्ट अप्रूवल किस नाम से है, और
बिक किस नाम से रहा है, मतलब नाम में ही चेंज है, अप्रूवल एक्स नाम से है और बिक वाई नाम से रहा है, अप्रूवल के नाम में ही चेंज है। मिस ब्रांडिंग का इशू है, इसको मिस ब्रांडिंग कहते हैं एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और जो लेबलिंग इशू तो यूनिफॉर्म मैंने आपको बताया ही था कि लेबल में लेटिन नेम, यूजफुल पार्ट, टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट, टाइप ऑफ मेडिसिन, ये सब जो है मेंशन ही नहीं है, और मेंशन है तो गलत मेंशन है, और एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक कंप्लायंस वो है ही नहीं। तो ऐसा दिल्ली के अंदर भी जो है अप्रूवल मिला हुआ है, लोग बेच रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत रेपुटेड कंपनीज हैं। उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा गैप, और ये मानो कि एक आम पब्लिक गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ हो रही है उत्तराखंड में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। सिट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं नींबू सत्व, सिट्रिक एसिड जिसको नींबू सत्व बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको छज्जी छार बोलते हैं, मेंथॉल जो ये पुदीना का सत्व होता है। तो अप्रूवल क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को क्या यूज कर रहे हैं, मार्केट में क्या आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अप्रूवल क्या है, एक्चुअल में रॉ मटेरियल वो क्या यूज कर रहे हैं, और मार्केट में क्या आ रहा है, इन सब का ट्रेसेबिलिटी कहीं भी नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे रेपुटेड ब्रांड इस काम को कर रहे हैं। ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा शर्मनाक है हमारे देश के लिए और हमारे मैन्युफैक्चरर्स और फिजिशियंस के लिए भी। तो ये सब है, मैं जो है ज्यादा डिटेल डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं इतना ही बताऊंगा कि बस सिस्टम गड़बड़ा रहा है काफी। इंडिकेशन मेंशन जो है लेबल पे कुछ और है, किस नाम अप्रूवल में कुछ और है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट अप्रूवल में कुछ और है, लेबल पे कुछ और है, स्पेलिंग मिस्टेक लेबल में काफी सारी है, प्रिजर्वेटिव का नाम जो है लेबल पे ट्रेसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारे गैप्स जो है अप्रूवल्स में मिले हैं उत्तराखंड में। यूपी और हरियाणा में लेबलिंग कंटेंट में बहुत ज्यादा गैप्स हैं, लैटिन नेम, यूजफुल पार्ट, रेफरेंस, यूजफुल फॉर्म, इंडिकेशंस, इन सब में भी जो अप्रूवल में है वो लेवल पे नहीं है। इस तरह के गैप्स जो है, ये मैंने कुछ स्टेट्स के जस्ट आइडेंटिफाई किए हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनसे, तो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे जो भी वक्ता हैं या जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, इनको एड्रेस करें और उन पे वर्कआउट जो है होना बहुत जरूरी है, हमारे पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए, पेशेंट को हमारी दवाई की एफिकेसी मिले उसको देखते हुए। तो ये मैंने रेगुलेटरी से संबंधित कुछ गैप्स आपको बताए। अभी कुछ गैप्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं एक ब्रीफ बताना चाहता हूं। कुछ एलोपैथिक इंडस्ट्रीज हैं देश भर की जिन्होंने आयुर्वेदा का एक अपना डिवीजन डाला हुआ है, आयुर्वेदा का लाइसेंस लिया हुआ है, आयुर्वेदा से वो काम कर रहे हैं, उनका एक अपना अलग फैक्ट्री है आयुर्वेदा की। उन लोगों को, वहाँ के स्टाफ को, यहाँ तक कि टॉप मैनेजमेंट को ये मालूम नहीं है कि एपीआई क्या होता है। वो एपीआई को समझते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एलोपैथिक की टर्मिनोलॉजी है। और हमारे आयुर्वेदा में एपीआई की फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो मतलब वो आयुर्वेदा की टर्मिनोलॉजी को ही यूज नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा गैप। मतलब वो, उनको अवेयरनेस नहीं है कि एपीआई भी कोई बुक होती है हमारे देश में। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्पेशली नवीन, डॉक्टर नवीन कुमार जी, डॉक्टर नवीन कुमार, प्लीज रीजॉइन। Am I audible to you, अग्निहोत्री साहब? यस सर, लगता है उनका कोई कनेक्शन वाला तार ही हिल गया, एकदम से वीडियो ऑडियो सब खत्म हो गया, नाम आ रहा है खाली। वो चेक कर रहे होंगे, डेफिनेटली चेक कर रहे होंगे। आदरणीय कटोच जी का बहुत बहुत स्वागत है। आ गए। आदरणीय जेपी सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागतम स्वागतम। कटोच जी अभी नमस्कार किए हुए हैं, वीडियो ऑफ किए हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। चेहरे पर रोशनी आनी चाहिए। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार अग्निहोत्री जी।
कैसे हैं? आज बढ़िया है। आपके चेहरे पर रोशनी नहीं आ रही है, वही तो अभी अभी आप थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा, बढ़ा ये। हाँ आप अभी डाल देते हैं, अभी डाल देते हैं। नहीं, फेस कर लीजिए प्रकाश की तरफ। अब ठीक है। हाँ, मच मच बेटर, मच बेटर। मैं कटियार साहब भी साथ में हैं आज सब लोग। लाइट जलाएं, लाइट डॉक्टर साहब, चेहरे पर लाइट। कटियार जी नमस्कार, नमस्कार, इनका नमस्कार, इनका नमस्कार, नमस्कार। चेहरा स्वयं में प्रकाशवान है। ठीक। क्या बात, स्वागतम क्या स्वागतम। जम्मू में? नहीं नहीं, मैं तो इधर ही हूँ, कल जाऊंगा। अच्छा, कल जा रहा? हाँ, आज वर्किंग था ना। हाँ, अच्छा। थोड़ी देर में बात कीजिए। आप कलकत्ता में हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भोपाल हूँ साहब। ओ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने कलकत्ता छोड़ दिया? मैं हमने कलकत्ता छोड़ दिया, कटियार जी को सौंप दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 33 साल से थे उस कंपनी में, तब हाँ, कटियार जी को सौंप कर चले आए। नहीं नहीं नहीं, पहले पहले 2 जनों का आधिपत्य था, अब अकेले कटियार जी रह गए। राजा है कटियार जी। ठीक है, ठीक, गुड। तो मैं नवीन जी नहीं आपका जुड़ पा स्वागत रहे। करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि कटोच सर कुछ इंडस्ट्री के ऊपर हमारे क्या स्कोप्स हैं और क्या चैलेंजेज हैं। आप रेगुलेटरी किंग रहे हैं इंडस्ट्री में, मिनिस्ट्री में, तो ये कटियार जी का भी विशेष आग्रह था कि कटोच जी को जरूर आना चाहिए। तो आपने हाँ, आशीर्वचन दिया, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। स्वागतम। थैंक यू, थैंक यू। सर्वप्रथम ये जो आप सीरीज मतलब ऑफ वेबिनार्स जो कर रहे हैं ना, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मतलब बड़ा ये प्रशंसनीय प्रयास है कि आयुष सेक्टर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है डिस्कस किया जाता है। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, चाहे प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं, चाहे वो क्या कहते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, वो सभी इश्यूज जो हैं यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। और आज का जो मतलब आज जो आपने करवा चौथ वाले दिन जो क्या कहते हैं विषय चुना है, वो तो एक ऐसा है कि वो विषय अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक विषय जो है बहुत बड़ा चैलेंज है कि आयुष इंडस्ट्री का क्या स्कोप है और क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले मैं सभी जो आदरणीय महानुभाव यहाँ पे उपस्थित हैं, डॉक्टर C.K. कटियार जी, डॉक्टर नवीन गर्ग, डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, डॉक्टर पवन शर्मा, डॉक्टर विष्णु शर्मा जी, डॉक्टर मदन थेंगवलू, वो हैं उपस्थित या नहीं आज? आज नहीं है, आज नहीं है। आज नहीं है, अच्छा। डॉक्टर विनीत अग्निहोत्री जी, जी नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और मोहसिन देलवी जी हैं? हाँ, उनका नाम आया है। अच्छा। अरुण श्रीवास्तव जी, राजीव सेतिया जी और श्याम सुंदर शर्मा जी। अनिल जौहरी जी जरूर आए होंगे। अनिल जौहरी जी नमस्कार, नमस्कार। आप सबको जो है नमस्कार और स्वागत है इस डिस्कशन में। देखिए कि मुझे कुछ टाइम जो है मौका मिला WHO में काम करने का। तो WHO में आप सभी जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक डिवीजन है। अब उसका नाम कुछ चेंज कर दिया है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ, इंटीग्रेटिव हेल्थ सर्विसेज करके जो है एक डिवीजन है। तो उसी में जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन या एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो 2002-03 में WHO ने जो है एक ग्लोबल सर्वे किया और उसकी जो रिपोर्ट आई, तो वो रिपोर्ट जो है 2002 में आई। और 2002 में ही जो है WHO ने एक स्ट्रेटजी जो है मतलब अनाउंस की, एक स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन 2002-2005। तो उसमें 4 चीजें जो है मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो ट्रेडिशनल मेडिसिन में 4 चीजें जो है उन्होंने क्या कहते बताई। सबसे पहले तो ये बताया कि मतलब पॉलिसी होनी चाहिए। हर कंट्री गवर्नमेंट जो है दे मस्ट हैव ए पॉलिसी फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन और अल्टरनेटिव मेडिसिन, ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, व्हाटएवर इट मे बी। एक तो पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। पॉलिसी जो है, जब पॉलिसी होती है तो उसी के हिसाब से जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है या गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है वो बनता है। और उसी के अंतर्गत जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो लॉज हैं या रूल्स हैं या जो भी रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं वो बनती है। ये एक होना चाहिए। दूसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक था वो ये था कि WHO emphasized, मतलब WHO मतलब brought out a document
for development of traditional medicine strategy after global consultation, series of global consultation. तो उसमें जो सेकंड जो बिल्डिंग ब्लॉक था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन की डेवलपमेंट कैसे होती थी, वो ये था कि अश्योरेंस ऑफ सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी। सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी, ये तीन जो है सब बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, ठीक है। तीसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक था वो ये था access to traditional medicine. Means government has the responsibility to provide access to the traditional medicine services. चाहे वो practitioners हो, चाहे institutions हो, चाहे वो क्या कहते हैं hospitals हो, dispensaries हो, वो ज्यादा से ज्यादा खोली जाए ताकि लोगों को जो है वो वहां उन जगहों पे जाए, उन practitioners के पास जाए और उनसे जो है अपनी जो है स्वास्थ्य सेवाएं ग्रहण करें। और चौथा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, that is related to drugs, that is rational use of the drugs. ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। अब इसमें 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से जो 2 क्या कहते हैं जो ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसमें जो है 2 जो है वो जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू ड्रग्स। तो हमारे भारतवर्ष में आप जानते ही हैं कि हमारे पास जो है लगभग इस वक्त मैं देख रहा था लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 9000 के आसपास जो है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, लगभग 9000 के आसपास। और उसमें से जो है लगभग 7000 जो है वो आयुर्वेदा के ही हैं, अकेले 7000 आयुर्वेदा के हैं। लगभग 590 जो है वो क्या कहते हैं यूनानी के हैं, और 360 जो है वो क्या कहते हैं होम्योपैथी के हैं, और जो सिद्धा के हैं वो लगभग जो है 130 या 40 के आसपास हैं। अब ये जो क्या कहते हैं इंडस्ट्री का जो साइज है बहुत बड़ा साइज है, परंतु अगर कंट्री को देखा जाए, कंट्री की पॉपुलेशन को देखा जाए, लगभग 138 करोड़ जो है जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से फिर भी कम है। और जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस है, मतलब ये जो इस इंडस्ट्री से हो रही है, वो हालांकि कई गुना जो है आगे बढ़ सकती है। पर कारण क्या है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, वो जो है ज्यादातर जो है वो क्या कहते हैं सेल्फ हेल्थ केयर मोड में है। सेल्फ हेल्थ केयर में लोग जो है जिनको पता है किसी चीज के बारे में, वो अपने आप जो है क्या कहते हैं दुकान में जाते हैं, कहीं भी वो मिल जाता है, चाहे त्रिफला चूर्ण जो है वो क्या कहते हैं चाहे पान वाले के पास मिले, चाहे किसी पंसारी के पास मिले, या अगर कहीं पे जो है आयुर्वेदिक केमिस्ट शॉप है या कोई शॉप है दवाइयों की, वहां मिल जाए, वहां पे अपने आप जाते हैं, ले लेते हैं। मतलब मैं ये समझता हूं और सोचता भी हूं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, when these are manufactured under Drugs and Cosmetic Act, under the provisions of the Drugs and Cosmetic Act, under the provisions of the Drugs and Cosmetic Rules, it means they are drugs, they are medicines. All of them cannot be the OTC products. वो जो है सारी की सारी OTC नहीं हो सकती, वो जो है मतलब दो cannot be used in self health care mode. भी अपने आप जो सेल्फ मेडिकेशन के लिए जो है वो उसमें जो है प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है दैट इज वेरी लिमिटेड, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिसिन दैट इज वेरी लिमिटेड। पर अब देखिए, अगर आप स्कोप देखें, स्कोप ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स और यूनानी ड्रग्स, वो दैट इज इमेंस एंड इंटेंस, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। परंतु उस हिसाब से जो है क्या कहते हैं जो एक तो जो प्रोडक्शन हो रही है वो कई गुना और बढ़ सकती है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये कई गुना बढ़ सकती है इफ जो प्रिस्क्रिप्शन जो है, इफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी मेडिसिन, इफ इट इज प्रमोटेड, इफ इट इज इनकरेज्ड बाय लॉ और बाय एनी अदर मीन्स, ये एक बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, इसी के साथ प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ ये भी लिखा हुआ कि एक तरफ जो है हम ये कह रहे हैं कि प्रोप्राइटरी मेडिसिन, हमारी जो मेडिसिन है वो दो किस्म की हैं, दो किस्म के जो है फार्मुलेशंस हैं हमारे पास। एक तो हैं जो क्लासिकल हैं, शास्त्रीय, जो जिस प्रकार से अथॉरिटेटिव बुक्स पे लिखा हुआ है वही इंग्रेडिएंट रहते हैं, उनका अनुपात भी वही रहता है, बनाने का तरीका भी वही रहता है, उनका नाम भी वही रहता है। परंतु उन इंग्रेडिएंट से जो है कुछ ऐसे नए फार्मुलेशंस भी बनाए जा सकते हैं जिनको हम प्रोप्राइटरी या पेटेंट फार्मुलेशंस कहते हैं, जिनको जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अंडर सेक्शन 3H1 जो है उसमें जो है बताया गया।
अब ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं जिनके ऊपर R&D हुआ है, हालांकि सभी के ऊपर नहीं हुआ, कई जो है वो क्या कहते हैं टेक्सचुअल रेफरेंस बेस्ड हैं, मतलब टेक्सचुअल रैशनल बेस्ड हैं कई फॉर्मुलेशंस, कई एक्सपीरियंशियल हैं, और कई ऐसे हैं जो R&D बेस्ड हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो जो है क्या कहते हैं R&D करती हैं, और उन्होंने अपने जो है एविडेंस बेस्ड जो है फॉर्मुलेशंस जो हैं बनाए हुए हैं फॉर स्पेसिफिक इंडिकेशंस, फॉर स्पेसिफिक यूजेस। तो क्या वो फॉर्मुलेशंस जो हैं, कांट दोज बी यूज्ड व्हेन द एविडेंस इज देयर, when the pathway of action that is known to the practitioner, can't that be used by the allopathic doctors? That is important. So I think we need to seek the permission or the this authoritative guidelines that those products can also be prescribed by the allopathic doctors. Because once, like I give you an example, like LIF52. But the prescription is not there from the allopathic doctors because there are certain inhibitions are there, prohibitions are there. Legal prohibitions are there. So I think that needs to be withdrawn, or those need to be repealed. Such kind of legal provision. उससे क्या होगा कि जो scope है, scope of use of these medicines by the patients, by the population, I think that can enhance manifold. That can enhance manifold. If you see the number of practitioners in our country, still we are far behind. If you see the doctor population ratio, that is far behind. WHO ये कहता है कि लगभग जो है 1000 लोगों के पीछे जो है एक डॉक्टर होना चाहिए, परंतु अगर अभी हम जो है वो जो हमारी जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो सिर्फ जो है उसमें जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स ही गिने जाते हैं। आयुष के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हालांकि दे आर आल्सो रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। पहले जो है इंडियन मेडिसिन सेंटर काउंसिल एक्ट था, अब जो है वो क्या कहते हैं नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एक्ट जो है उसके अंतर्गत जो है वो रेगुलेटेड है, परंतु फिर भी जो है उनको जो है इसमें काउंट नहीं किया जाता। जो डॉक्टर पॉपुलेशन जो रेशियो है उसमें जो है वो काउंट नहीं किया जाता। तो एक जो है ये एक स्कोप को बढ़ाने वाली बात है कि हम द यूज ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन बाय द पॉपुलेशन, बाय द कम्युनिटी, इट कैन बी इनहांस्ड if the provisions are provided to the allopathic doctors to prescribe these. This is secondly, our medicines, they are medicines, they are drugs under the provisions of the Drugs and Cosmetic Act. Legally they are medicines, but we are failing, our industry is failing to comply to the external regulations, means the regulations of the importing country. So that is why they are exporting these products in the form of food supplement, dietary supplements. Means they are not registered there as drugs or medicines. So that is failure of our medicines, failure of our products to comply to the regulatory provisions for the drugs, for the medicines which are prevalent in the other countries. So export is there, but again the export is limited. Only those products which fit into the basket of food supplements or in the form of dietary supplements or some other single ingredient based self-healthcare products or food products. So those products are going like that. Even the big names in Ayurveda medicines, I think they are exporting like that. So this scope can also be enhanced if some of our industry, unfortunately, our AYUSH sector that is mainly in the small and medium, small and micro. Yeah. Hardly big players are very few. Means those who have turnover more than 100 crores or 150 crores or like that, and very few those who have annual turnover of more than 1,000 crores or 2,000 crore or 3,000, 4,000 crores, more than that. So most of the players, most of our industry members, they are in the micro or small scale, either less than
Some they have only turnover up to 5 crores only. 5 crores only. Now, if you see the guidelines for the stratification of the industry issued by that Department of Industry, Ministry of Commerce, means now that limit has been enhanced. What is micro? What is so that has been enhanced, but still our industry, and not due to this the financial constraint. Now this is financial constraint. The infrastructure facilities for the manufacturing of these medicines, for the testing of these medicines, they are also very limited. Rather very scattered, very rare. Only very few industry they have their own in-house testing laboratories. Very few. So when these kinds of gaps are there, then how we can think of producing safe medicines, effective medicines, and quality evidence, medicines with evidence of quality assurance, quality control. These aspects, I think those are being ignored. No doubt, as the previous speaker was saying, that what is happening in Himachal Pradesh, what is happening in Rajasthan or Uttarakhand, there are enforcement issues are there. There is poor enforcement of the standards as given in the pharmacopoeia. Rather the standards in the pharmacopoeia, they have never been validated. They have never been validated. That whatever is so that is why no voice is ever raised by the stakeholders about the standards given in the pharmacopoeia, whether they are acceptable or whether they are implementable or not, or enforceable or not. So these kinds of issues are prevalent in our sector, drug industry sector. So these need to be addressed. Now, if you see the steps taken by the government in the last about 10 years, I have been associated in taking those steps. The first and foremost was that a scheme was introduced by the Ministry of AYUSH. I think that was in the 5th five-year plan, that century-sponsored scheme for strengthening the infrastructure of the industry or of the laboratories. But the quantum of support, the quantum of financial support, that was very limited. I think that was not adequate. That was not sufficient. Over the next 5-year plans, it was enhanced, but later on it was stopped. Now presently, just 1.5 years back, when I was in the Ministry of AYUSH, I tried that let there be a scheme through which we can provide support to the industry for strengthening their infrastructure, particularly for putting up, for installing the new machinery, the new technology, or for the testing facilities. But I don't know whether that scheme has been implemented or not. But I think the scheme was approved. But again, the funding pattern is it is not much encouraging. It is not very huge, and most of the support I think that is provided to the government pharmacies and to the government laboratories. It is very limited for the private sector institutions. Now, I think this issue needs to be properly discussed, and some enabling provisions need to be created in that scheme. And for that, I think persistent discussions and the consultations with the ministry among the stakeholders that is required. I am sure that when this scheme was conceptualized, I had written to the industry that give us the list of instruments, list of equipment which could be included in the scheme, so that accordingly the support to the industry can be provided for procuring that kind of equipment or that kind of technology. So, but I don't think that list has been included in that scheme. So the challenge is, now there is another challenge which the industry is facing. That is availability of the quality raw materials. All of you know that the most of the raw material, more than 75% of the raw materials that comes from the forest.
from different sources, undoubtedly from the same plant, but that plant is grown in different parts of the country, naturally grown. So the chemistry of that plants, the chemotype, the constituents, they differ. So how to assure quality? How to assure? That is very important. So certified quality raw material, that is needed for the industry, so that, because the starting material has to be of the desired quality. It has to be of the desired quality, right? On one hand, the industry itself, they do not have this in-house testing laboratories, and they are procuring the raw materials from the mandis like the Khari Babli or other mandis. Whether that material has been tested before putting into the formulation, no. So I think that process, that infrastructure, that kind of process need to be adopted by the industry, and it should be supported by the government. So that is also important. And the second is, so one about the raw material, quality raw material is a big challenge, particularly. And secondly, the another challenge, that is a technical challenge. If you see the standards which are given in our pharmacopoeia, whether it is Ayurveda pharmacopoeia, Siddha pharmacopoeia, Unani pharmacopoeia, or homeopathy pharmacopoeia, it is only the physical constants, ash value, water solubility, or other thing. There is no markers. But if you see the US pharmacopoeia, if you see the European pharmacopoeia, the two markers, minimum two markers are there. And on one hand, we have started manufacturing extract-based formulations, and we are exporting also. So the importing countries, they always they need the evidence of the quality, means the active principle or the active ingredient, what is the titer of that in that formulation. So that evidence they need, but we fail to provide that. So just on the basis of physical constants as given in our pharmacopoeia, I think that is not sufficient. So unless and until these parameters are included in the pharmacopoeia, or particularly for the purpose of exported, the products which are being exported, I think that can help a lot in promoting the exports, in promoting the international trade of our Ayurveda, Siddha, Unani medicines. Now, one more challenge is there. One more challenge is there, that now we have started, the industry has started making, manufacturing such formulations like proprietary formulation up to extract-based formulations, but the pathway of their action is not known. They are putting on the level that the indications, very specific claims they are saying, but how they are working. Because the medical fraternity outside, not only outside India, but within the country also, they want that. How this medicine is working, how the medicine is working. So pharmacological effect, right? So these studies are required. So scientific interventions, they are required. We cannot bypass scientific intervention, particularly for developing the so-called new drugs, or the new formulations. So evidence of safety, first of all, the evidence of quality means, again, the evidence has to be subjective, objective, not the subjective. It does not mean that whatever is written in our books, that is all subjective. So objective evidence of safety, quality, objective evidence of safety, objective evidence of efficacy. These evidences are required to have our good quality products, and only then these products can be promoted, means that their trade can be promoted and these products can be exported. I think in the panel discussion today, I think we have representatives from the industry, the big industry. Dr. Katiyar is there, and then this Dr. Garg is also there, and there are representatives from the industry associations like this Dr. Pavan Sharma, and then this
other Arun, Srivastava, Rajiv. I think they will provide a lot of inputs, a lot of suggestions that what can be done. And the previous speaker, I think he has also given some ideas that what would be the way forward for enhancing the scope of our industries, of our products, and also how to meet out the challenges which the industry is facing. So with these words, I conclude, and I wish the grand success for this session. And I think useful inputs will come from the experts, all the participating members. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Now I would like to request Dr. C.K. Katiyar ji. Dr. C.K. Katiyar, sir. Yes, sir. Just a minute. Just a minute. Is it available, visible? Yes, it's clear. Yes, Okay. your screen is Okay. visible, sir. So thank you, Dr. Pawan and Dr. Katoch and all the learned speakers, faculty, audience, everybody. It's my pleasure to be here with you. So scope already has been covered. Today, I would like to draw your attention to few challenges which were unforeseen so far. Dr. Katoch just has touched in brief the pharmacopoeial parameters. What I'll do in order to save time, I would try to finish within 20 minutes because today's Karwa Chauth, otherwise must be waiting for all of us, right? So I will touch some of the points why it is not happening. So what are challenges with the industry? I will today talk about the research and quality related challenges. One is pharmacopoeial parameters of quality. Second is selection of phytochemical compounds themselves. Third is some sound is coming from the background. तो कढ़ाई चलने की में हाँ, आवाज आ रही है, वही वो आप ही घर की आदरणीय भाभी जी का कमाल है ये। नहीं, आवाज करती रहेंगी सब जल्दी जल्दी फ्री हो जाए। नहीं, मेरे घर तो नहीं आ रही। अच्छा। ओके, ये बढ़िया था, बंद हो गया। तो सभी गरबा जो सभी क्या है, किसी के ऐसे तो आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी प्लीज कंटिन्यू। सो देन लैक ऑफ नेगेटिव मार्कर्स। आपने देखा कुछ दिन पहले पिछले साल गुड़ूची के बारे में लोगों ने बोला कि गुड़ूची लेने से कुछ लोगों को लिवर की प्रॉब्लम हो गया साउथ इंडिया में। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टोल्ड दैट नो इट वाज अ टिनोस्पोरा क्रिस्पा। बट फिजिकल एक्टिविटी तो ठीक, आप फिजिकल देख के बता सकते हैं, बट इफ समबडी सप्लाई विद द एक्सट्रैक्ट, उसको कैसे पता करेंगे? तो नेगेटिव मार्कर पर किसी ने काम नहीं किया, बट वी फाउंड आउट फ्रॉम यूएस somebody, Dr. Eklas Khan work, he identified one chemical marker compound which was unique to Tinospora crispa, not available in Tinospora cardifolia. So we have recently 2 months ago isolated that compound, and now we are using that as a negative marker compound. I'll come later to this. Lack of biologically active marker compounds, lack of quick efficacy evaluation methods, lack of awareness about herb drug interactions, very slow technology adoption in manufacturing technologies, lack of adoption of latest pharmaceutical dosage forms, and few other issues. So let us first talk the pharmacopoeial parameters. So today, for the first time, I'll be sharing some data from industry, which normally people shy away, but today I will share some data. So these are the pharmacopoeial parameters. Dr. Katoch has already described that they can be microscopic, macroscopic, physical, and foreign matter. In certain cases, I say of marker compounds, and then heavy metals. So if you look at this data,
This Ministry of PLIM published long back around 2009 a data from 1998 to 2009, 3,486 samples were tested, out of which 11.5% were found to be spurious. Now, spurious means they might have been failing either in the foreign matter. The definition of foreign matter also is unique, that if you are with, suppose you have to use the tulsi leaf, a leaf के अंदर कोई stem का part आ गया, तो that is the foreign matter. Right. So it is not allowed more than 2%, right? This was the data published in 2009 from PLIM. Now we have tested, this is data from our company, 2,637 samples we tested, which belong to 134 species from 2018 to 2020. Minimum 3 samples or up to 10 samples also, 10 lots also we have tested, and we tested on all the API parameters. We found that out of 2,637, 91% passed and 228 samples were failing on one or the other parameters, and these are the part used. These are the parameters on which they are failing. So most of the samples were failing on macro and micro description, most of them. And which is not included here, some of them also fell into the foreign matter, which is mentioned below that. So fail in macro and micro and in foreign matter. No sound is there. Hello? It's very clear. Sound is very clear up to me. So please continue. Yeah. So our figure also told that roughly if we take the on an average, rate of rejection is almost 11%. It is safe, and these are the different parameters on which the products were failing, if we leave it. So therefore, we have tried that these parameters of pharmacopoeia can be divided into 2 parts. One is remedial, means they are failing a description, foreign matter. Then you can do the sorting of the samples, remove the extraneous matter. So some of them can be still used after certain processing, some which cannot be used. Therefore, if they are failing in water soluble extractive, alcohol soluble extractive as a content, they need to be rejected only. So some of these problems can be taken by tackled by taking care of good agricultural practices, good collection practices, and post-harvest practices. This is the and if you see 16% of the parameters, 16% of the samples were failing in the non-remedial. So therefore, out of total rejections, 80% could still be rescued. It was only almost 20% which needed this one. So nearly 11.7% material were rejected. If you look at the quantum throughout India, then 3% of material got rejected, which amounts to, no, I'm not talking from my company, it is total global data by Goraya, almost 15,000 metric tons material gets rejected, gets failed. And most of them is failing into foreign matter, which is ranging from 3 to 47%. Therefore, there is adulteration in this particular case. So therefore, totally, if you see, overall, nearly 73,000 metric tons material gets wasted annually due to poor cultivation practices. If you look at the heavy metals, we tested this is data from 183 samples, out of which they failed into 20 samples, fell almost 10%. To my surprise, half of them fell into only cadmium, and single plant was Prashniparni. Prashniparni was falling into cadmium, which has contributed 50% of this. Mostly raw material were not falling into the heavy metals. This kind of data from the industry I wanted to share. Now I'm coming to the very, very critical thing.
Dr. Katoch was talking about the marker compound, that USP has 2 marker compounds. We have Indian Pharmacopoeia has 1 marker compound. API now started having marker compound. Now I want to go into genesis of marker compound. So long ago, when API decided to identify marker compound, there were certain chemists sitting in the committee. They looked at the data, publications, books like Compendium of Medicine from CDRI, even other literature sources for chemistry, and whatever plants were used in Ayurveda, what chemistry was done, they looked at them. Out of that, they identified certain chemical compounds. Now let me come here. What happened? Those compounds were isolated by extremely good, extremely intelligent natural product chemists. But their purpose was not at all to use those compounds to standardize Ayurvedic medicine. They wanted to isolate a compound which is new, which is novel, which is not known, so that they can publish the papers. As a result, they started either from methanol or from hexane to identify the compound. And therefore, those marker compounds we started incorporating in the pharmacopoeia. I will show you their impact. In Ayurveda, we are normally using only water, only decoction, right? So now look at some of the data which is an eye-opener. We tried to identify, to look at the API, what are the marker compounds mentioned in certain volume 8 and volume 9. We found out of 30 medicinal plants, whatever marker compounds have been mentioned, only 4 are water soluble. Only 4. 36 are not water soluble. So I will not be surprised if you make Haridrakhand and try to find curcumin, a drug inspector will fail your sample, so it does not contain curcumin. It will not contain curcumin. Right? So there, suppose somebody making decoction, काढ़ा बनाया, वो फेल कर देगा, सब में आपका है ही नहीं, कंपाउंड इसके अंदर नहीं है. अब मैं आपको भी डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा मैं क्यों कह रहा हूं. ना भी इसको देखिए इंडियन फार्माकोपिया, हमने सिमिलर एक्सरसाइज वीडियोस फॉर इंडियन फार्माकोपिया. हियर आल्सो वी फाउंड 43 प्लांट्स, जिसके अंदर केवल 4 थे. आउट ऑफ 44 ओनली 4 प्लांट्स वर देयर जिसके मार्कर कंपाउंड वाटर सॉल्युबल थे, 40 नहीं थे. अब उसका तरह इंपैक्ट देखें. हम आपको एक एग्जांपल दिखाया झंडू पंचारिस्ट का. तो झंडू पंचारिस्ट में हमने करीब 35 कंपाउंड आइडेंटिफाई किए डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट से. ये हमने उसका टीएलसी दिखाया, इसको छोड़ देते हैं. ये टेबल देखिए. तो हमने इसके अंदर देखा कि कौन कितने कंपाउंड्स हैं, फिर प्लांट में कितना पीपीएम में अवेलेबल है और हमारे प्रोडक्ट में कितना अवेलेबल है. तो फॉर 35 फॉर नंबर इज 36 प्लांट में जो हमने कंपाउंड आइडेंटिफाई किए, वी फाउंड 23 ऑफ द कंपाउंड्स वर नॉट इवन विजिबल, वी कुड नॉट डिटेक्ट. उसका रीजन बहुत हो सकता है. एक तो क्वांटिटी उसकी स्मॉल हो सकती है, लेकिन if we look at the ppm present in the compound in the plant itself, then looking its quantity going into the product, it does not make sense. So therefore, because it is pure and simple decoction which is fermented, those compounds were not there because the API or the pharmacopoeia picked the wrong compound as a marker. Let us look at the similar example. Look at the Chyawanprash also. Look at here also, we did the same exercise in Chyawanprash. We identified and all these study was done in our laboratory. It is not published anywhere. So in individual plant, how much compounds are there, we identified, we quantified, and then we tested. You see here, the figure is still bad. Here you see, most of them are not detected. Hardly 10 compounds are detected in the Chyawanprash. So if somebody starts identifying the compounds reported in the literature or reported in the pharmacopoeia and the raw material, start testing them in Chyawanprash, they will find that 90% of compounds are not even present. Does it mean those herbs are not there? Does it mean the product is substandard? No, my dear, because your selection of compound was.
was wrong. So therefore, if I look at this one, Chyawanprash, out of 32 phytochemicals, 30 were used and only 16 compounds were detected. Most very traces, very traces. The major compounds, as I showed you. So what is the way out? Way out is that we should identify that our strategy of identification of marker compound for Ayurvedic products was basically wrong. It should have been driven by the procedures, by the process of manufacturing, which is used in Ayurvedic industry. If we take water extract, the total chemistry should have been repeated. Even now it should be repeated for all the herbs starting from water extract, and then identify the compound. Then you will find in the Savarishtar also, you will find in Chyawanprash also, you will find in all the products. So that is my first point here. So new marker compound need to be isolated. Total pharmacopoeia needs revision. Dr. Katoch is right. We had, when I was at Dabar, and even from Dhandu also, we have submitted a letter to APC, Ayurvedic Pharmacopoeia Committee, that 150 plants standards are wrong. You need to correct them. We submitted data of 20 lots each. They accepted 50 out of them. They accepted, but still the monographs have not been corrected. So now one more angle is going to be added about marker compounds. So from this year, I have taken a mission that I will talk about the new this marker compound, this issue of identification of wrong marker compound, and will push the Ayurvedic Pharmacopoeia committees to identify laboratories in the preferably in CCRS to completely redo total chemistry from water extract to make it more productive. Now we come to second part. I was saying about the quick biological assay methods. So like Dr. Mashelkar long ago said that when you are developing allopathic medicine, you are moving from man to mouse. But when you are looking at the validation of Ayurvedic medicines, you can think of moving from man to mouse. So from mouse to man in allopathic, from man to mouse in Ayurvedic. That's what probably Dr. Katoch was saying about the efficacy studies. So efficacy studies, quick methods are bioassays, which can be cell-based, which can be enzymatic assays. And these assays we have developed here. So this is the some about the brief or how are they conducted. You do the literature survey. Even and here the product solubility profile is very important. And so preparation of sample is very important. Otherwise, all data can go wrong, right? So there are published methods for all the assays. In case of classical medicine, these assays can be used for validation of efficacy. In case of proprietary products, you are developing the multiple prototypes. You can use the assay to identify the best working product so that you can take it forward out of multiple. These are the assays what we have currently: non-enzymatic assays, enzymatic assays, cell-based assays. If you look at the left side, there are the areas we have covered right now: antioxidant, anti-aging, drug interaction studies. We are conducting these studies on almost all the new products now, all the proprietary new products. So for anti-diabetic, skin health, aphrodisiac, acetylcholinesterase is the mechanism of action oriented assays. Most of these assays are basically good. What Dr. Katoch was saying are oriented for mechanism of action. So if memory enhancer, if Brahmi is there, then it is working by acetylcholinesterase inhibition mechanism. So most of the assays we are having, and these assays can be used for validation of efficacy in the products. Due to shortage of time, I will not go deeper into that. These are some of the assays: ABTS for antioxidant, LOX and COX for anti-inflammatory, natural killer cell activity, and anti-ages. If you look at one of the product, Diabrista, it is showing alpha glucosidase activity, very nice, alpha amylase, very nice. And in cell-based, when we looked at the L6 myotube, it was able to reabsorb glucose almost 100%.
So that kind of studies, this is what we can do now. Some data on Chyawanprash. So it has FRAP antioxidant 24.9, ABT antioxidant 12.9 microgram per ml, anti-glycation. This is very interesting. So all the aging, it starts from glycation, this is called AGEs, advanced glycation end products. They are the one responsible for aging process. So at what dose you are preventing the aging process? That the studies what we have done. NK cell, natural killer cell, acetylcholinesterase for memory booster, histamine release, any activity which is approximately 20 microgram or less is supposed to be quite potent in case of plant extracts or plant products. For single compound, it is 1 microgram or 2 microgram. For this, almost 20 microgram. So therefore, we find all these activities and good, very good level of IC50. If you look at the Mahayoga, we have done LOX lipoxygenase inhibition, 8.32, it is perfectly all right because this is half of less than 10. So this is very potent anti-analgesic and anti-inflammatory product. Now, other than this, if you now look at therefore there is a need of identification, application of relevant, analytical and biologically active marker compounds. There is need for herb-drug interaction studies in safety protocol. Identification, yes, this is very important. Churna is the simplest dosage form, but most complex. I can guarantee you buy 5 churna from market Sifla, and you take Ashwagandha churna, and you test them for microbial load. Other than Dabur and Jhandu products, most of them you will find microbial load will be around 5 lakhs CFU. Why? Because we have failed to produce an effective and cheap decontamination technique for churnas. Government API has permitted, APC has permitted gamma. So why I say Jhandu and Dabur? Because they are subjecting all the churnas to gamma radiation. That's why their product will always be fine, less than always almost 100 only, not more than 100. So microbial decontamination technique needs to be developed. Cheaper techniques need to be developed. Natural foaming agents we need. We see lot of herbal shampoos, but how herbal they are? 0.1% and 99% chemical. So basically it is SLS. Why cannot we develop रीठा का saponin लेकर के उसको थोड़ा stabilize करके, can we induce some detergent activity and develop the natural foaming agent? Then the product will be really Ayurvedic. Otherwise, it is only for namesake. Similarly, for natural preservatives. Similarly, for natural identical flavors. And most important is adoption of the latest pharmaceutical technologies like nano formulations, like other dosage forms which are consumer friendly dosage forms. Those are the kinds of challenges are from science based. So today I have not spoken about the regulatory. Regulatory already Dr. Katoch has covered, and it has been covered. So a lot has been achieved so far regarding raw material and finished product standardization for herbal products. However, in case of what we were discussing so far about only related to herbal products, but what about the metal-based products, the Shastra, the source of these? Almost no research. Every research is at the very, very rudimentary stage. That needs to be focused upon. And for this, very high level of interdisciplinary work is required. And I am sure someday it will happen. Long ago, DST had formed a committee for this. Some funds were also identified, but later on, I don't know what happened to that project. I am talking some 10 years ago. And then approach of product standardization needs to be more relevant and inclusive, with due consideration given to Ayurvedic method of processing. So do not adopt blindly the chemistry and biology which was not developed for you.
All of us are committing this mistake so far. Our needs are different, so our research also has to be done, to be repeated and done differently. And this already we have discussed, the new technology of products need to be developed in order to take the system forward. Very good thing is that now Ministry of Ayush is having MOU with CSIR. Today morning itself, I delivered a lecture at AAA in Jammu on the similar kind of topic. So I am very hopeful that out of these MOUs with Ministry of Ayush and multiple institutes, certainly good kind of research will take place, which will be relevant and inclusive for Ayurveda. With this, Dr. Pawan, thank you very much for giving the opportunity. So I thought that today being this Karwa Chauth day, let us complete in 20 minutes. So I think I have finished in time. Thank you very much. Dr. Katiyar, you have raised a very important point that the water extracted components there in contrast or anything are of great value instead of otherwise. They are containing the component which are supposed to be in the parameter. I just and all the markers were identified from methanol or hexane. Really, and I just send you your personal message in chat box. We were doing our post-graduation research work on Strychnia spotatorum. We got our water extract prepared from medicinal chemistry department and put in this. First, we prepared this alcoholic extract of Strychnia spotatorum and kept in the fridge of Professor Guru Saab, our department, and it got fungal infection. I just informed to Professor Shukla that what happened. He told that you go for the alcoholic extract. And then we went for the alcoholic extract in the same manner from the medicinal chemistry department and put in the same fridge in the same conditions. And it is surprising to me that water extract can remain intact. And then I proceeded with the E. coli working on that as per my research work. So this might be the water extract might be containing such components also which are protective from the fungal infection. This is what you told that water extract is of great, much more value and containing more of the markers. This is really one important information. Oh, Doctor, that's why I'm saying. And do you know, ELSD is a detector which is costing about 35 lakhs to identify non-UV active compounds. Most of the HPLCs have UV detectors. People do not have ELSD. When I ran back, we purchased ELSD for that. So we observed that most of the water soluble compounds can be detected by ELSD and not by UV. So so many things are there. But I'm only saying that our selection of marker compound of today is totally wrong. We have to relook at it. Total chemistry needs to be changed and to be redone, suitable to the Ayurvedic methodologies. And for my case, it was more important that as per the Shushruth information, they also talked about that to make a paste like chandan and apply over the inner side of the bucket and put the dirty water, and it will be sedimented and precipitated, and you can filter it and it will be potable. It will become potable. So they were talking about the alcohol water extract. There was not the time of the alcoholic extract of that thing. So. Thank you, sir. Thank you. You're Dr. Pawan. Yes, sir. Thank you. Thank you, Dr. Katiyar. Thank you very much, sir, as always. Please share your presentation. It is eye-opening, no doubt. So kindly share your presentation, Katiyar sir. Thank you very much. हमेशा आपका प्रेजेंटेशन इंस्पायरिंग रहता है. जी. तो मैं अब वो अरुण जी से थोड़ा सा समय मांगते हुए मैं राजेश सेठिया जी को आमंत्रित करना चाहता हूं. उन्हें कहीं पहुंचना है, तो मैं 5 मिनट मध्य प्रदेश के विचार जानूं कि मध्य प्रदेश आयुर्वेद एसोसिएशन के अध्यक्ष आयुष निर्माता संघ के श्री राजेश सेठिया जी इंदौर से. स्वागत है राजेश जी. नमस्कार सभी दोस्त भाई लोगों को. मित्रों, हम लोग मध्य प्रदेश में आयुर्वेद की दवाओं के जो क्वालिटी वाला कंसेप्ट है, इसके लिए एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं. इस प्रयोग के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि एसोसिएशन लेवल पर हम लोग अपना खुद का एक वेयर हाउस गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाने जा रहे हैं,
जिसमें सारे जड़ी बूटियों को हम अपने पास, क्योंकि ग्रेडिएशन जो है वो हमारे फार्मर्स को नहीं आता है, और जो क्वांटिटी होती है हमारी हर्ब्स की, उनको रखने के लिए भी हमें एक वो बढ़िया सा वेयर हाउस चाहिए, टेम्परेचर मेंटेनेंस चाहिए। तो हम इस नए प्रयोग को हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कुछ साथियों के साथ मिलकर, और शासन भी इसमें हमारी सहायता कर रहा है। तो जो क्वालिटी का कंट्रोल का जो मेन बेसिस है, उसके लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी अभी इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हम मैं चाहूंगा कि पवन शर्मा जी एक बार इसका पूरा अलग से सेमिनार करें। आज की बहुत ही शानदार जानकारी हमें मिली है, लेकिन हम चाहते हैं कि एसोसिएशन लेवल पर जो नेशनल एसोसिएशन हमारी लोग है, वो हमें समय समय पर इस बारे में गाइड करती रहे, और हम चाहते हैं कि उनकी सबकी लिंक पवन शर्मा जी हमें नेशनल एसोसिएशन से अवश्य जोड़ें, ताकि हमें अधिकतर ये चीजें और इस तरह के सेमिनारों में भी हमको अधिक से अधिक अटेंड करने को मिले, और हमारे सारे सदस्यों को आप सभी महानुभावों के अनुभव का पूरा लाभ मिल सके। ये हमारी विशेष रूप से आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी का विशेष स्नेह हमें प्राप्त होता रहे। और पवन जी का एक बार फिर से धन्यवाद कि पवन जी ने हम सबको इस इतने महत्वपूर्ण इरा में जोड़ा, और हम आप सभी से जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त में आपने बिल्कुल अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका राजेश जी। मैं अब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अरुण श्रीवास्तव जी को। मोहसिन साहब का नंबर। मोहसिन साहब, आपका ऑडियो नहीं जुड़ा है, लेकिन मोहसिन साहब, वर्ल्ड यूनानी फाउंडेशन से मोहसिन साहब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका ऑडियो नहीं जुड़ा है। मैं आदरणीय अरुण श्रीवास्तव जी, प्रेसिडेंट पद्मा, मोहसिन जी का ऑडियो जुड़ा। मोहसिन देलवी जी, यस, स्वागतम, वेलकम मोहसिन साहब, वेलकम। मोहसिन देलवी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर देलवी रेमेडीज, जनरल सेक्रेटरी यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन एंड प्रेसिडेंट यूनानी फाउंडेशन, नई दिल्ली। स्वागतम साहब, स्वागतम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मोहसिन साहब जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागतम। सॉरी, लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। और एम आई ऑडिबल? यस, क्लियर। तो थोड़ा सिग्नल की इश्यू होगी। जी जी जी। चैलेंजेस यूनानी के लिए बहुत सारे हैं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज आपके आ रही है सर। ओके, सॉरी फॉर ज्वाइनिंग इन लेट। असल में एक हमारी कल कॉन्फ्रेंस है और तकरीबन 600 650 डेलीगेट्स हैं उसमें, तो उसी में थोड़ा सा हम बिजी थे। चैलेंजेस यूनानी के बहुत हैं। यूनानी इज अ वेरी स्मॉल सेक्टर एज कंपेयर्ड टू आयुर्वेदा। इंडस्ट्री में अगर 8000 कंपनीज हैं, 8500, तो यूनानी की 650 कंपनीज के करीब है। Market share also is quite limited. But I just shift to another room. यहाँ काफी सारे लोग बैठे हैं। This is better. तो ये सेक्टर जो है यूनानी का as compared to आयुर्वेदा is very small. चैलेंजेस बहुत सारे हैं। इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो यूनानी को एज यूनानी कोई नहीं जानता। इट इज या तो इट इज बीइंग एक्सपोर्टेड एज हर्बल मेडिसिन
or herbal supplement or Ayurveda supplement. As Unani, it is not going, and it is basically because the nomenclature of Unani is different in each country. In China, it is known as war medicine. In Persia, it is in Iran, it is known as Persian medicine. In South Africa, it is known as Tib medicine. Pakistan, it is known as Eastern medicine. So the nomenclature of Unani is different in different countries. So that is why we are facing a problem of exporting as Unani. The ministry, or I think the CCRUM also tried its best that other countries also start using Unani in the nomenclature, but no country was ready to dilute their name. And in the Indian market also, if we see that we are basically more restricted to the Muslim pockets, unfortunately. Though medicines don't have any religion, but we are restricted to the Muslim pockets. That is why the market is also very limited. And this is the major challenge. I mean, we suppose, I mean, but with the internet coming on, with online opportunities coming on, people now when you notice that more of non-Muslims are able to buy Unani medicines. This is a big relief for us. They want to buy Unani, but the problem is of the availability. They do not want to, I mean, the shops are not there in their areas, the Unani shops. So they are forced to go online now. So this is one of the advantages of online marketing. And but still, there is a lot of potential in Unani. I mean, we won't say that our medicines are not working, but they are good. But the only problem is the availability to the consumer. Yes, there are certain challenges that certain herbs are not available easily. We are because as this traveled from Greece to Arab, Persia, and then to India, so we collected a lot of herbs from the other countries. We have from Greece, there's a mastic gum, mastagi resin, mastagi, which we call. So this is quite expensive now. Since the pandemic, before the pandemic, we were buying at about 7,000, 8,000 rupees a kilo. Now it is available at 26,000 rupees a kilo. Similarly, some herbs are coming from Iran, the Gul Banafsha, and Ustaquddus. So this is the problem, that because we've a lot of herbs are imported, so the cost factor is also quite high now. I mean, if we compare Unani medicines with the Ayurveda medicines, people notice that why are Unani medicines expensive than Ayurveda. So this is challenges that we are facing. Alternates we are not using, though we've asked for our Central Council for Research in Iranian Medicine to suggest herbs where we can use as alternates legally. There's a product called ambergris. It is basically from the sperm whale. The cost of it is, today's cost is about 25 lakh rupees a kilo. So that is quite expensive for us, and the rates definitely go high in that. So these are the certain challenges what Unani is facing. Opportunities are, yes, there are, though there are certain challenges, there are opportunities also. Since Ministry of AYUSH has been formed, people are getting more and more aware of Unani. The market is expanding with the government of India taking steps in startups and all.
So people are entering into the Unani sector also, and definitely the market is growing. I won't like to take much of time because I have to prepare for tomorrow. I think that's... Thank you, Mohsin sir. Thank you very much. Yeah. In brief, you have highlighted all the problems almost. Excellent. Thank you. All the best for your grand event of 3 days. Right. More than a marriage of daughter. More than a marriage of daughter. Very true. Very true. Right. All I'll the take best. leave. I'll take leave. Thank Thank you. you very much. Thank you. Mohsin sir. Yeah, Srivastava ji. बस आपसे हाल Are you हेलो ही coming? बोलनी थी. Are you coming tomorrow or on? Most probably Sunday? not. Most probably not. I have dared to enter this meeting also in spite of my bad health and sore throat. Oh my God. Okay. Take Cannot care. be Take care. Right. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, sir. Now I would like to request Sri Arun Srivastava ji. Arun ji, pranam. सर नमस्कार. पहले अपनी क्षमा प्रेषित करूंगा कि बुरे गले के बावजूद मैं हिम्मत करके आ रहा हूं और आपकी हिम्मत को सलाम है साहब. आप ऐसे ही जुड़े रहें, आशीर्वाद देते रहें. ये टॉपिक सर इतना मतलब हम लोगों से रिलेवेंट है कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा नहीं, इसमें तो जरूरी शामिल होना, लोगों की बातें सुननी है और समझ में आनी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सर जो मी as a chairperson of a association which mostly belongs to micro sector or small sector. Even small sector is in a very less minuscule percentage. They are almost, you can say, 99% micro sector industries. So the micro sector industries have altogether a very different kind of problems. सर जहां तक स्कोप की बात की जाए तो स्कोप तो सर आयुर्वेद का इतना है कि किसी भी चीज की बात करें तो डिमांड और सप्लाई का मसला होता है. तो इफ देयर इज डिमांड, सप्लाई अपने आप खुल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. स्कोप की अगर हम बात करें आयुर्वेद की, आयुष की, तो डिमांड क्रिएट करनी होती है. डिमांड कैसे क्रिएट करनी होती है? जैसा मोहसिन सर ने अभी इसके पहले बोला कि हमारे आयुष डिपार्टमेंट जब से बना है तब से मेरे ख्याल से वो ओवर उसमें हैं इस तरीके से अवेयरनेस कराने में. लेकिन कहीं जो मुझे एक थोड़ी सी लगती है, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितने गुणी लोग वहां पे बैठे हुए हैं, पर मुझे लगता है कि अगर हम आयुष की बात करें या यूनानी की बात करें या सिद्ध की बात करें तो उसकी अवेयरनेस लोगों को हम लोग उसकी भाषा में ही समझा सकते हैं. अभी हम लोगों का जो ट्रेंड चल रहा है, अगर हम बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एनालिसिस की, किसी भी चीज की, तो दे गो ऑन द स्टैटिस्टिक्स. अभी तक हमारा क्या था, हाउ फार वी आर गोइंग टू रीच, व्हाट इज द प्रोजेक्शन. तो ये सारी चीजें जो टेक्निकली चलती हैं, आई थिंक आयुर्वेदा को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया जा रहा है. मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. एक मीटिंग कुछ दिनों पहले हुई थी जिसमें कॉमर्स सेक्रेटरी साहब भी थे और उन्होंने हम लोगों के पास क्वेश्चनर भेजे थे कि आयुर्वेदा के एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए. तो उसमें जो क्वेश्चनर था, वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से थे कि वो दूसरी प्रोडक्ट्स के लिए तो सूट कर रहे थे, दे वर सूटेबल फॉर अदर प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन था कि विच आर द प्रोडक्ट्स विच कैन बी रिप्लेस्ड इन द फॉरेन मार्केट बाय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स. अब ये एक टी शर्ट के लिए, शर्ट के लिए हो सकता है, नीडल के लिए हो सकता है, आयरन स्टील के लिए हो सकता है, इवन एलोपैथिक मेडिसिन के लिए हो सकता है. लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ किस तरीके से, कैसे मैं बाहर की बात करूं जिसको रिप्लेस किया जा सके. तो इसी तरीके से तमाम सारे क्वेश्चंस थे जो दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए तो ठीक थे लेकिन यहाँ नहीं थे. तो क्रक्स यहीं पर आता है कि पीपल आर नॉट अवेयर आउटसाइड अबाउट आयुर्वेदा. अभी डॉक्टर DC कटोच साहब ने कहा कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज वहां पे ड्रग्स में रजिस्टर्ड नहीं है. सर आयुर्वेद वहां पर ही एक्नॉलेज नहीं है और वहां पर इतना स्ट्रिक्ट लॉ है कि इफ यू कम अंडर ड्रग्स इट विल बी सोल्ड ओनली अंडर प्रिस्क्रिप्शन. एंड सिंस देयर आर नो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ओवर देयर, व्हाट इज द यूज ऑफ द ड्रग्स बीइंग रजिस्टर्ड अंडर द प्रोडक्ट्स बीइंग रजिस्टर्ड अंडर ड्रग. तो सर कुछ इस तरह की चीजें हैं कि हम लोग जो
स्कोप बढ़ाने का जो तरीका है, मन सबका है, मेहनत सबकी हो रही है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि मिसिंग है, थोड़ा सा एक मिसिंग लिंक है, वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमारी जो आयुर्वेद का, क्लासिकल आयुर्वेद का जो पैटर्न है, अगर वो, जैसे अभी नवीन सर ने बताया कि सिलेबस में भी आ रहा है, लोगों को पता चलेगा, तो अब फॉर एग्जाम्पल सिर्फ छोटी छोटी चीजें से अगर हम बता दें लोगों को, एक एग्जांपल देता हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसको तो जबरदस्ती आप जैसे भी खिलाते पिलाते हैं, अपना खाता पीता रहता है। जहां वो 4-5 साल या 6 साल का होता है, तो उसके बहुत सारी माताओं की शिकायत होती है, मेरा बच्चा खा नहीं रहा है, क्योंकि एक कंपैरिजन है कि उसको इतने टाइम खाने चाहिए और ये चीजें खानी चाहिए, इसका वेट ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मेरे से गुणी जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, शायद मेरी बात को गलत होगी तो वो सही भी कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर वो डॉक्टर्स ये अवेयरनेस फैला सकें कि नहीं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इस बच्चे की, वो कितना खाएगा, कैसे खाएगा, क्या खाएगा, तो मेरे ख्याल से घरों में पेरेंट्स को पेरेंटिंग इजी हो जाएगी। या पेरेंटिंग इजी हो, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है इस तरीके से, तो लोगों को पता चलेगा, डिमांड एक क्रिएट होगी। तो जब तक हम बेसिक फिलॉसफी और साइंस आयुर्वेद की जो है ना नहीं फैलाएंगे लोगों के बीच में, तब तक उतनी डिमांड नहीं आएगी, और तब तक हम पैच वर्क्स में ही ये काम करते रहेंगे। ये एक अलग चीज है कि आयुष डिपार्टमेंट ने एक जगरनॉट रोल कर दिया है, और इतने अस्पताल खोले जाने की बात हो रही है, सारी चीजें हो रही, तो इससे तो जाहिर सी बात है कि एक डिमांड क्रिएट होगी, लेकिन एक स्केप्टिज्म जो बना रहेगा, उसको दूर करने के लिए एक साथ में ये कैंपेन चलने बड़े जरूरी हैं, जिससे साथ में फेथ आए, क्योंकि एक प्रोडक्ट में फेथ आना बड़ा जरूरी है, एक साइंस में फेथ आना बड़ा जरूरी है, जो अभी लोगों सॉरी में फॉर lacking है। इंटरप्शन, प्रियदर्शनी जी प्लीज स्टॉप शेयरिंग एट प्रेजेंट। प्रियदर्शनी जी वेलकम, प्लीज स्टॉप शेयरिंग एट प्रेजेंट। मैं कंटिन्यू। हेलो डॉक्टर प्रियदर्शनी जी, काइंडली स्टॉप शेयर। मैं आगे चल सकता यस हूँ। यू कैन स्टार्ट सर, यू कैन स्टार्ट, प्लीज थैंक यू, स्टार्ट। थैंक यू। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये अवेयरनेस इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि योग जिस तरीके से विदेशों में पॉपुलर हुआ है, उसने अपनी एक्टिविटीज दिखाई हैं लोगों को पता चला है, अवेयर हुए हैं, तब जाके वो उससे जुड़े हैं। और योग जितना पॉपुलर इंटरनेशनली हुआ है, अगर हमको आयुर्वेद को भी वैसे ही लेके जाना है, तो हमें वो एक्टिविटीज दिखानी पड़ेगी, वो फिलॉसफी समझानी पड़ेगी, और सारी चीजों को वैसे ही बताना पड़ेगा जैसा आयुर्वेद सिखाता है। एक ये भाषा आती है हमेशा की, उनको उनकी भाषा में सिखाया जाए। तो आई थिंक जब हम उनकी भाषा में सिखाने की बात करते हैं, तो हमें वो टर्मिनोलॉजीज यूज करनी पड़ती है जो आयुर्वेद के लिए बिल्कुल एलियन है, और हम उसका मिक्सअप कर देते हैं। तो आई थिंक एक ये मेरे ख्याल से एक चैलेंज है हमारे आयुर्वेद को थोड़ा सा उस एट पार पे न ले जाने का। दूसरा सर, जो अवेयरनेस की मैं बात कर रहा था कि डिमांड क्रिएट करने की बात है, तो वो पहले के वक्ताओं ने बता ही दिया कि अगर हम सिलेबस में ले आ दे रहे हैं, और अगर हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटी लेवल पे, डॉक्टर्स के लेवल पे अगर अवेयरनेस कैंप्स चलाए जाए, जिसपे थोड़ा उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो आई थिंक वो ज्यादा फैलेगा और ज्यादा डिमांड उसकी क्रिएट होगी। अगर इंडस्ट्री के पार्ट में हम आए सर, तो जितना अभी तक बताया गया था, उसमें बेसिक चीज यही आती है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी कंप्लीट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी बिल्कुल हम लोगों को उस लेवल का नहीं मिलता है। और मैं माइक्रो लेवल की चैलेंज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हर डीलर हर एरिया में सर मोनोपोली रखते हैं, एक या दो होते हैं, और कम से कम 200-200 250 किलोमीटर की दूरी पे छोटे जो होते हैं उस एरियाज में तो होते भी नहीं है, अगर इंडस्ट्री कहीं दूर पड़ी हुई है तो। अब सर हम लोगों के पास टाइम बाउंड ऑर्डर्स आते हैं, टाइम बाउंड ऑर्डर है, हमारे पास सर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, हमने देखा कि एक इंग्रेडिएंट हमें लग रहा है कि कुछ ये बिलो क्वालिटी का है, हमने उसको वापस किया, डीलर से बोला इसको वापस करो, इसको चेंज करो,
उसने बोला भैया यही है हमारे पास और अगला आएगा कम से कम इतने दिनों बाद। तो सर ये चैलेंजेस आते ही हम लोगों ने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भी उठाया हुआ है कि जब तक गवर्नमेंट हमारा सपोर्ट इसमें नहीं करेगी, रॉ मटेरियल में, तब तक हम क्वालिटी की बात करना एक बड़ा मुश्किल काम है। और स्कोप बढ़ाने में क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक ये पार्ट नहीं क्लियर होगा तब तक किसी और चीज की बात करना इट्स ऑलमोस्ट रिडंडेंट, कि जब तक ये पार्ट क्लियर नहीं होगा। और ये अवेलेबिलिटी हम लोगों के पास कभी कभी नहीं होती है और हमें समझ भी नहीं आता कि हम क्या करें। हमने बिजनेसेस डाल रखे हैं फॉर प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि अल्टीरियर मोटिव्स है उसके पीछे। मजबूरियां ऐसी खड़ी हैं कि हाथ मतलब किंकर कभी मूल जैसे खड़े हुए हैं, डिलेमा में है कि हम करें क्या। तो सर एक तो ये चैलेंजेस हमारे सामने जो रॉ मटेरियल का ये ह्यूज है। दूसरी बात डॉक्टर सीके कटियार से बेहतर कौन बता सकता था, उन्होंने तो इतना इलाबोरेट तरीके से बताया है कि क्या क्या कमियां क्वालिटी में हैं और किस किस तरीके से दूर किया जा सकता है। आई थिंक दैट शुड बी पुश्ड फॉरवर्ड और विल बी फुल्ली सपोर्टिंग डॉक्टर सीके कटियार इफ ही नीड्स एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आवर्स। वी आर इन फुल सपोर्ट विद दैट, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा सर, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर कि हम लोग जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है, मैंने अभी बात की अवेयरनेस में भी हमको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहिए। सर लाइसेंसिंग में भी हमको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी यूज करनी चाहिए। आज की तारीख में सर हम लोगों को जो लाइसेंसेस मिलते हैं वो जिस तरीके से पहले एलोपैथ का होता है कि हम इंडिकेशन देते हैं, नाम बताते हैं, इसके बेसिस पे काम होता है, और उस तरीके से हमको प्रोप्राइटरी लाइसेंस मिलते हैं। क्लासिकल में तो कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन प्रोप्राइटरी लाइसेंस वैसे ही मिलते हैं। सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटीज में एक चेंज आना चाहिए कि हमें वातज पित्तज कफज इसके कैटेगराइजेशन देने चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट की एफिकेसी को और बेहतर तरीके से पब्लिक में ला सकते हैं। एक आधा मेरा प्रीवियस आपसे इंटरेक्शन था तो बात हो रही थी उसमें, और इसको मैंने जिक्र भी उठाया था और बहुत सारे लोगों ने सर सपोर्ट भी किया था कि अगर हम एक कॉन्स्टिपेशन की दवा उठा रहे हैं तो वो वातज है, पित्तज है, कफज है, हम एक जनरल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। और वहां पे आयुर्वेदा मात खाएगा, 100% मात खाएगा कि कुछ लोगों को सपोर्ट करेगा, कुछ लोगों को नहीं सपोर्ट करेगा। तो हम लोगों को सर लाइसेंसिंग के प्रोसेस से अगर हम लोग को ये चेंज मिल जाए, ये चैलेंज अगर दूर हो जाए, तो मेरे ख्याल से एक स्कोप और बढ़ जाता है कि हम आयुर्वेद को आयुर्वेद की लैंग्वेज में जब हम बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे। डॉक्टर्स तो जानते ही जानते हैं, जब उनके पास पेशेंट आएगा तो वो उसी हिसाब से दवाएं भी दे सकेंगे। अभी आज की तारीख में हम क्या है, एलोपैथ के पैटर्न चूंकि सबके दिमाग में वो चढ़ा हुआ है, तो उसी पैटर्न में प्रोडक्ट्स भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नई नई भाषाएं इस्तेमाल करते हैं सर, जो कि हमें जरूरत ही नहीं है। अगर आयुर्वेद की बेसिक फिलॉसफी और साइंस को समझा जाए तो आई थिंक जितने सालों से ये फिलॉसफी चली और आज भी वही रोग हैं, इक्का दुक्का कुछ एक मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो चीजें आई हैं वो एक अलग चीज, अदरवाइज सारे के सारे ऑलमोस्ट वैसे ही रोग हैं। और हम उन चैलेंजेस को वैसे ही डील कर सकते हैं जैसे पहले डील किए जाते थे। बीच का दौर खत्म हुआ जिसकी वजह से सारी चीजें नहीं हो रही हैं। मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज आई है जिसको अपनाया जा रहा है, लेकिन आयुर्वेद में अगर मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज को अपनाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आयुर्वेद का कोई भला हो पाएगा। ठीक है, हम स्टैटिस्टिकली कुछ परसेंटेज जरूर बढ़ जाएंगे, हो सकता है एक्सपोर्ट में हम जो है ना हर्ब्स को भेज सके, फॉर्मुलेशंस नहीं भेज पाएंगे। और जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक एक्सपोर्ट पे फॉर्मुलेशंस नहीं जाएंगे, तब तक आयुर्वेद या आयुष का कोई मतलब हम उसको सही मायने में ग्रोथ नहीं कहेंगे। और फॉर्मुलेशन जाना तभी हो सकता है जब वो अवेयर होंगे कि हमें ये फॉर्मुलेशन क्यों चाहिए। उनका अवेयरनेस तभी होगा जब वो साइंस ऑफ फिलोसफी को समझेंगे। सर एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, मेरी खांसी थोड़ी सी उखड़ रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक लास्ट बात नवीन सर ने उठाई थी कि जब वो जाते हैं तो टेक्निकल स्टाफ में वो आयुष के डॉक्टरों को नहीं देख पाते हैं इंडस्ट्री में। सर मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं माइक्रो इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं और मेरा एसोसिएशन 99% माइक्रो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। सर 2000 के बाद से ये जो है ना कंडीशन आई थी जीएमपी के शेड्यूल टी में कि हमको टेक्निकल स्टाफ में बीएमएस डॉक्टर रखना, उसके पहले नहीं था। सर मुझे समझ में नहीं आता है कि एक आयुष डॉक्टर जो पढ़ के 4 साढ़े 4 साल 5 साल जो भी हरा है, उसको हम किस वेज पे रखे अपने यहाँ। एक मॉनिटरी चीज आती है माइक्रो इंडस्ट्री के पास। माइक्रो इंडस्ट्री अगर बीएमएस को हायर करने जाएगी तो क्या कहेगी कि हम 10,000 देंगे आपको, 15,000 देंगे, 20 देंगे, 25 देंगे, क्या देंगे। इज इट वर्थ फॉर द डॉक्टर? वो कभी हमारी तरफ नहीं आएंगे, हमारे पास वो नहीं मिलते हैं।
जब हम उनके पास जाते हैं तो उनकी सैलरी की डिमांड्स इतनी होती है कि एक माइक्रो सेक्टर का आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है एक बीएमएस डॉक्टर को, और ये खटू सत्य है। अगर इसको भी डॉक्टर्स, इसको भी हमारे रेगुलेटर्स नहीं जानते हैं तो सर इससे बड़ा बचकानापन क्या हो सकता है सर, कि एक माइक्रो इंडस्ट्री से कहा जा रहा है कि आप बीएमएस को अपॉइंट करो, बीएमएस उस लेवल पे आएगा नहीं जिस लेवल पे वो सैलरी आती है। तो सर ये इधर कुआं उधर खाई वाला मसला है। इसका एक सोल्यूशन सर हम लोगों ने दिया था कि तमाम सारी माइक्रो सेक्टर्स, क्या होता है 30 डेज का उनका रन नहीं होता है सर, उनका 30 डेज का रन नहीं होता है। तो जब 30 डेज का रन नहीं होता है तो फुल टाइम के बजाय एक पार्ट टाइम की अगर बात कर दी जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो फिर भी बियर कर पाएंगे और आराम से एक बीएमएस डॉक्टर्स की जो यूज है, यूटिलिटी है, वो भी हो जाएगी, क्योंकि वो डेली नहीं खरीद रहा है और डेली वो सारी चीजें नहीं कर रहा है परचेज। तो जैसी उसकी जरूरत है वैसा उन्होंने बुलाया और वैसा उनको पे कर दिया, वो उनका अपना नेगोशिएशन है कि कैसे करें। तो हमने पार्ट टाइम के लिए सर की बात की, लेकिन जब जब हमने ये बात की आज तक सर उस बात को नहीं किया गया है। और इस चैलेंज के बारे में कोई नहीं सोचता है, जो कि अब ये ड्रग एक्ट में है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो हेल बेंट अपॉन है इसको फॉलो कराने के लिए। और बाय डिफॉल्ट या तो सर हमारी रेंज में आ रहे हो तो बीएमएस डॉक्टर्स को रखें, बाय डिफॉल्ट सर पूरी इंडस्ट्री के लोग इस मामले में चोर नजर आते हैं कि ये जानबूझ के, कुछ कोई होंगे मेलाफाइड इंटेंशन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनके मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है सर वो भी तो नहीं रख पा रहे हैं। वो किस तरीके से उसका पूरा खर्चा अगर मजदूरों का और टेक्निकल स्टाफ की हम बात कर लें उससे कहीं ज्यादा बीएमएस डॉक्टर ले लेगा कि अगर हम फुल टाइम रखना चाहेंगे, क्योंकि बीएमएस डॉक्टर फुल टाइम अगर आना चाह रहा है तो उसकी रोजी रोटी है, वो फुल टाइम हमको देगा, तो वो कैसे हमारे यहाँ रह पाएगा कम सैलरी में? वो तो एक सर्टेन सैलरी डिमांड करेगा ही करेगा। तो सर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि आयुष मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि माइक्रो भी सरवाइव करें। माइक्रो में भी ऐसा नहीं है कि मेलाफाइड इंटेंशन ही होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे नीयत से भी काम कर रहे हैं। और अगर वो पार्ट टाइम का जो ना जरा सी छूट दे देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत आराम से इसको फॉलो कर लेंगी और उनके नॉलेज का बेनिफिट भी उठाएंगी। अभी क्या है कि कहीं पर भी इंस्पेक्शन की बात आती है, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं हमारे पास कि हम क्या करें इसके लिए भाई, बीएमएस डॉक्टर का एक हमारा सबसे बड़ा लफड़ा है और कोई है भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं है। सर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है कि हम क्या करें। मैं अपने नवीन सर, हाँ यस सर। सर एक्चुअल में माइक्रो की बात नहीं है, जो बड़ी बड़ी बिग इंडस्ट्रीज हैं ब्रांडेड, जो मतलब जिनका नाम है, उनके यहाँ, जिनका नाम मैं नहीं बता सकता, उनके यहाँ भी ये सेम प्रॉब्लम है कि बीएमएस आके देखता ही नहीं है। नवीन सर वो हुआ एक मेलाफाइड इंटेंशन, वो एक अलग चीज हो गई। मैं मेलाफाइड इंटेंशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि कोई अफोर्ड कर सकता है और वो नहीं ले रहा हो तो मेलाफाइड इंटेंशन हो गया। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ एक मजबूरी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है, और गवर्नमेंट को इस पॉलिसी में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कैसे चेंजेस लाए। मेलाफाइड इंटेंशन के पीछे तो हमेशा सरकार को रहना चाहिए, मेलाफाइड इंटेंशन में हमेशा ऐसा रहे। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, मेरी किस्मत है कि एक लेडी डॉक्टर है, उनके हस्बैंड यहाँ पे काम करते हैं और ना वो प्रैक्टिस करती है ना कुछ करती है, तो मेरी किस्मत है कि वो मेरे को मिल गई और बहुत आराम से पिछले 7 सालों से वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हर जगह नहीं है, तो सर इस पे भी जरूर ध्यान दिया जाए। यही कुछ स्कोप और चैलेंजेस की मैं बात करना चाह रहा था और अपनी बात को मैं सर यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बियरिंग। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है अग्निहोत्री जी? अरे मैं बल्कि अरुण जी की बात बढ़िया रखी, एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि नवीन जी और मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। नवीन जी का मतलब ऑब्जेक्शन और हमारा अरुण जी का उसमें सजेशन या उनकी शंका, उसके बीच में एक चीज हो सकती है, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, अगर गवर्नमेंट इतनी रिलैक्सेशन दे दे कि एक बीएमएस डॉक्टर या एमडी रजिस्ट्रार को वो इस ढंग से एंगेज करें कि वो एक हफ्ते के लिए 4 नियर बाई इंडस्ट्रीज को कवर करे और उसको अगर बोलो 1,20,000 रुपए तक का बना दे तो दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएंगे। जब जब रॉ मटेरियल है जो भी चीज उसकी नीड हो एज पर इंडस्ट्री शेड्यूल हो जाए तो ये चीज थोड़ा सा एक मैनेजमेंट के तौर से देखी जा सकती है। बाकी तो गवर्नमेंट की रूलिंग तो फॉलो करना ही है। बिल्कुल सर, जो है रूल वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने सर लेटर्स दिए हुए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर, लेकिन सबका अगर सपोर्ट मिलेगा, जैसे आपने भी सपोर्ट किया इस बात को, क्योंकि वो एक मजबूरी है सर, तो अगर इस तरह से सपोर्ट मिल जाएगा तो सर जरूर गवर्नमेंट भी सुनेगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, कोशिश की जा रही है। अब देखिए सर कब तक क्या होता है।
अभी यार तो follow आपने कीजिए, sir. सेहत के ख्याल रखिए और सेहत के परेशानी के बावजूद आप जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। मैं अब एक आग्रह करना मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? आ रही, प्लीज। आ रही है। आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता था, बुरा न माने तो। थोड़ा आज लेट हुए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं श्रीलंका से आदरणीय डॉक्टर केसी प्रियदर्शनी का गुण रत्न का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर केसी प्रियदर्शनी, जी जी जी, वेलकम मैडम। काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर प्रियदर्शनी जी, गुणरत्न अग्निहोत्री जी। जी सर, गुणरत्न जी ने नमस्कार ज्वाइन किया है, केसी गुणरत्न जी। जी 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 ज्वाइन किया है। अभी अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कर लीजिए मैडम जी। Hi, God, sir. Good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। Sir, shall I start now? आप म्यूट है पवन जी। पवन जी आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए। डॉक्टर पवन जी आप देखिए, आपका माइक म्यूट है। गुड इवनिंग सर। वो डॉक्टर प्रियदर्शनी का ये शुरू कराते हैं। सुरेश शेयर। हाँ यस, ओके। मेरे नेट बार बार कट रही है सर। नहीं ठीक है, आ गई आवाज है आपके सपोर्ट। हाँ नहीं मैडम गुणरत्न जी पूछ रही है, टैबलेट पे जुड़ा हुआ हूँ। वो पूछ रही है, डॉक्टर गुणरत्न जी पूछेंगे क्यों ना स्टार्ट करना है। Please start. Thank you. So I would like to welcome Dr. KCP Gunratne ji. As we know that it is her third presentation in our series of webinars. She is postgraduate from NIA Jaipur, and it's my pleasure that she is again here, and she is going to present her talk over the thrombosis. And we are fortunate enough that she is the only guest speaker on this thrombosis. So I welcome from IRES, and you please continue with your presentation. Thank you, madam. Thank you. Yes, please. Thank you, sir. Thank you. Namaskar. Doctor, should I share the slides now? Yes. Okay. Sir, is it okay now? Yeah. You are visible and your voice is clear. Sir. Yeah. Okay, sir. Respected all dignitaries and in Ayurveda and all other participants. Actually, this is, I think, a special chance for me to talk, especially in thrombosis care in Ayurveda, and I have to thankful to all the committees of AYUSH SAMRIDDHI. First, we'll move. We'll see what are the subtopics under the topic. Today, I'm going to talk the introduction, sites of thrombosis, causes, risk factors, symptoms, types, diagnosis, management, medicine, and prevention. First of all, I have to tell the thing is we are not getting direct reference to thrombosis, formation, or any other things in Ayurveda. So first, I have to give a little idea about that thrombosis in allopathic way. Because of that, I have to talk about allopathic way in first. If we consider about that blood clots, that is a natural process in our body to prevent unnecessary bleeding from the body. But if any person having unnecessary clots in uneven time or in lifetime or any other unusual time, that may be a problem. So we have to consider about that blood clots.
Then if we consider what is it, then that venous thrombosis or phlebothrombosis, that means the similar words in deep veins, is a life-threatening condition. Further, a semi-solid clot in veins, which has got high tendency to develop pulmonary embolism and sudden death. And the third most common vascular diseases after ischemic heart diseases and stroke, and it is a silent killer. And it has incidence of 1 per 1,000 annually in adult population, and it is the third most common vascular disease. Then we have to see what are the common sites of these can occur. Occurs most commonly in the lower extremities, then the superficial femoral and the popliteal veins in the thigh, and posterior tibial and peroneal veins in the calves. Then we have to consider about the causes for the thrombosis. If any injury to vein in lower limbs, if any illness affect to veins because of the immobility of the patient or a part of the body, then because of bone fractures, mostly in lower limbs, then kind of certain medications and the obesity, then the chronic varicose veins because of some genetical disorders, because of some autoimmune disorders that cause thrombosis. Then who are the most risk for blood clots? Then blood clots became more common as people get older. We all know in a younger age, we are not getting that much spontaneous blood clots in our body, but in old ages, they are making blood clots. And especially when they are over age 65, then long hospital stay, because of some illnesses, they have to stay in a long period in hospital, especially in immobilized position. And after some surgeries or some traumas, then the blood clots or blood clots formation may be increased. Because of some our lifestyles also can make blood clots, especially obesity, then sedentary lives because of their habits or because of other illnesses, and smoking cigarettes. Then other factors can increase risk, that taking birth control pills for a long period or hormonal replacement therapies. And in pregnancy of ladies, then in cancer patients, or they have treated for cancers previously. Then sometimes they are having their family history of blood clots, especially such as factor V Leiden disease, antiphospholipid syndrome or polycythemia vera, sickle cell anemia, likewise problems. Then because of that coronavirus, especially that COVID-19, that blood clots formation has increased. Then because of spinal cord injuries and because of heart failures. Then what are the most common symptoms of a blood clot? Wherever the blood clot lodge, according to our body part, they are getting various signs and symptoms. If it's lodged in abdomen, then the abdominal pain, sometimes associated with nausea and vomiting, or nausea or vomiting. If it's lodged in an arm or a leg, then they feel very painful or tenderness to touch. Then swelling will be occur, then redness and warmth. And if the blood clots lodge in the brain, they may be having strokes. Depending on the part of the stroke occurs, they may be having various kind of problems, especially sight problems, then hearing problems, inability to move or feel of side of your body, or sometimes may be associated with seizures. Then if that blood clots in heart, maybe they are getting heart attacks such as crushing chest pain, sweating, pain that travels down the left arm, and or shortness of breath. If the blood clots lodge in lungs, then they may be getting chest pain, difficulty in breathing, and sometimes can lead coughing up bloods. Then what are the types of thrombosis? Especially according to our
system of blood may be having two types of thrombosis. If it is in arteries, we call it artery thrombosis. If the blood was lodged in venous, there we are calling venous thrombosis. Then diseases occurs due to thrombosis. According to the places of the thrombosis lodged, we can name some diseases, especially deep vein thrombosis or venous thromboembolism. Then a stroke, especially because of arterial thrombosis. Then ischemic heart diseases or acute coronary syndrome because of arterial thrombosis. Then breathing problems. Then thrombosed hemorrhoids. Then what are the early signs we are noticing of the thrombosis of deep veins? Thrombin or cramping pain